two disks of same moment of inertia rotating about their regular axis, passing through center and perpendicular to the plane of disk of angular velocities omega 1 and omega 2. They are brought into contact face to face, coinciding the axis of rotation. The expression for loss in coinciding of energy during this process is, so we're given कि हमारे पास दो similar disks है which are rotating about axis passing through their center. दोनों का moment of inertia same है, एक ओमेगा 1 से कर एक ओमेगा 2 से, and later हम उनको contact में ला रहे हैं like this, उनका axis same रखते हुए, and अब वो एक ओमेगा डैश से रोटेट कर रही है. दोनों का इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, एंड क्योंकि इनको साथ में रखा हुआ है तो ये एडिटिव है, तो ये हो जाएगा एट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नेक्स्ट हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड उससे हम कह सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा 1 प्लस आई इंटू ओमेगा 2 would be equal to final 2i into omega dash, right? So यहाँ से हम i को कॉमन ले सकते हैं, omega 1 plus omega 2 is equal to 2i omega dash. I would go, and we can say that omega dash will be equal to omega 1 plus omega 2 upon 2. Next, we have to find the loss of energy during this process. जो energy हमारे पास initially थी, that would be K1 is equal to half I omega 1 square plus half I omega 2 square. And जो हमारे पास energy finally है, that is half into 2i into omega dash square, and omega dash is omega 1 plus omega 2 upon 2 whole square. Let's solve these. 2 गया, that would be I into omega 1 plus omega 2 square whole upon 4, and kinetic energy initial would be half common, I common, and we have omega 1 square plus omega 2 square. And now we have to find the loss in energy, so we have to subtract these. So kinetic energy final minus kinetic energy initial, delta K, is equal to I upon 4 into omega 1 square plus omega 2 square plus 2 omega 1 omega 2 minus half I into omega 1 square plus omega 2 square. I upon 2 common, omega 1 square upon 2 minus omega 1 square plus omega 2 square upon 2 minus omega 2 square plus omega 1 omega 2. Next, we can take the LCM here. That would be minus 2 whole minus 2 whole. That is going to be minus omega 1 square upon 2 minus omega 2 square upon 2 plus omega 1 omega 2. If we take minus sign and half common from all of it, then it would be minus I upon 4 whole into omega 1 square plus omega 2 square minus 2 omega 1 omega 2. That would be minus I by 4 into
ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होल स्क्वायर। हमने अब फॉर्मूला यूज़ किया है a प्लस बी होल स्क्वायर का फर्स्ट, इसे ओपन अप करने के लिए, एंड यहाँ पे, एंड देन हमने इसको सॉल्व किया है, एंड यहाँ पे हमने उसी फॉर्मूला को यूज़ किया है a माइनस बी होल स्क्वायर का। सो क्योंकि हमें लॉस्ट बताई थी एनर्जी, तो फिर ये नेगेटिव आना ही था डेल्टा। सो हमारा जो आंसर है वो है I/4 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होल स्क्वायर। लेट्स सी इफ इट इज ऑप्शंस। हियर इट इज। I hope it is clear. This is the solution.